आपको ढेर सारी बधाइयाँ, आपका इंटरव्यू कॉल आया है। थैंक यू सर। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप यहाँ शानदार करें और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सर फॉर योर विशेस। हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो ऑल सेट फॉर दिस मॉक इंटरव्यू। सर। यस सर, आई एम रेडी। शुरू कर सकते हैं। जी सर। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर, माय नेम इज विकास कुमार। I did my matriculation from Netarhat School. I did my intermediate from Rajasthan. So one second. I did my intermediate from Rajasthan. I'm graduated in nautical science from TS Chanakya in 2010. And since last 10 years, I was working in Merchant Navy. And since 2020, I'm preparing for the civil services. Okay, so you have been working already over the last 1 decade in Merchant Navy. Yes, sir. Then why you want to shift to civil service? You could have continued with that Sir, job. Sir, civil services was my prime target, but as I belong to a very poor family and I needed money in the early stage of my career, that's why I choose Merchant Navy in the initial stages. And when I am complacent and think settled financially, so I am giving a chance to my prime target. Okay, who is the army chief at present? Sorry, sir, I couldn't recall his name. Who is the naval chief? Sorry, sir, Air I Force couldn't chief? recall. Sorry, sir. I'll see this, sir. I couldn't recall the names. Good. Acha, please tell about Agni missiles. Are you aware about the same? Yes, sir. Mm-hmm. Sir, Agni missiles are indigenously built missiles, and we have till now we have achieved the fifth generation of the missile, Agni 1 to Agni 5, and we are working on Agni 6 also. Agni 5th is having a range up to 5,000 kilometers, and it can carry nuclear weapons also. Okay. What do you mean by intercontinental ballistic missiles? Sir, intercontinental ballistic missiles means these missiles can be used to attack a target which is on the different continent, and ballistic shows that it follows the parabolic path, which is uncontrollable and which is fire and forget type of missile. Okay. Cannot Are be you aware? Are you aware about exclusive economic zone of India? Yes, sir. Yes, sir. Exclusive economic zones are 200 nautical miles from the shore of any country, from which any country has the right to explore the natural resources, including the marine resources. Very good. So, are you aware about the concept of the blue economy? What is that? Yes, sir. Blue economy is a holistic concept to utilize the resources present in the sea like fishing, seaweeds, tourism, research and development, and the mineral exploration. Okay. India is working well on that field. So, Okay. Very good. Your optional thank you. subject? My optional subject is PSIR, sir, Political Science and International Relations. Why did you choose this subject? Sir, as nautical science was not there, as my graduation subject was not there in the list, and I was inclined towards the international relation because I had the opportunity to see many countries in the world. That is why I decided to choose this subject. Okay. Additionally, sir, this subject is helping me in GS also, which is having overlapping of around 40%. Okay. Please tell about the Central Asian policy which the Indian government has been pursuing over the last a decade or so. Sir, Central Asian is the region which is comprising of the five countries Mm-hmm. which lies north of India, and India is trying to revive its earlier connect uh, of earlier era. Uh, Now India is connecting with the Central Asian with SCO,
and we are working directly with the Central Asian also. Few years back, we invited all the Central Asian heads to our Republic Day parade as a chief guest. Do you And think that India's increasing influence in Central Asia is aimed to checkmate the growing influence of China out there, or is it the sir, other way around? sir, our attempt to reconnect with the Central Asia is multifaceted. We cannot say that it is only to target the Chinese influence, but as India is growing by itself, so we have to deliver to our promises in the backyard also. So we are working on that front also, and simultaneously we are countering Chinese influence also in the region, which is having a huge presence right now. Okay. How do you see India's policy approach regarding Palestine in the backdrop of increasing conflict between Palestine and Israel? So recently, a terrorist organization Hamas attacked Israel, and India is, as always, taking the world towards the peace. So our PM, uh, our PM has has been he criticized the attack from the Hamas, and he also called for the peaceful negotiation, and the reply by the Israel, which is causing huge civilian destruction in the Palestine. India is also against that thing. So what India is approaching, India is trying to settle everything in a peaceful manner by negotiations, not by the bombs. Okay, And very good. presently, when the world is being divided in two fronts, one supported by the West and the other supported by the Chinese side, Chinese and the Arab sides, India seems to be the only country which has the potential to solve this conflict. Okay. How do you see India's policy towards Indo-Pacific region? Do you think that the presence of Quad has certainly changed the environment in favor of India? Sir, Quad was initiated in 2007 and finalized in 2017. Uh, and as we see, the geostrategic and geopolitical importance of the Indo-Pacific is increasing day by day. So India wants to be a major pole playing in the field of the geostrategy. So what India is trying to play a role by unilaterally, bilaterally, multilaterally, and plurilaterally. So via Quad, we are not only targeting the China. Of course, the Chinese influence can be countered, but the Quad will help in other manners also, like supply chain, like promotion of democracy, and yes, sir, the Quad can be said that one of the master stroke or one of the useful policy for India to play a big role in Indo-Pacific. So However, the please tell us that India's neighbors are never happy with India. You take example of Dhaka, you take example of Nepal, you take example of Sri Lanka, you take Pakistan, you take China, even you have in the southeast, you have Myanmar. We find that there are more irritants rather than areas of cooperation between India and these countries. Your take on this? Do you think that this signifies failure of India's foreign policy? sir, foreign policy of any nation is cannot be decided by just one event. And if we talk specifically about our neighborhood, it is mainly the relation is mainly decided by the history. Historically, we were together, but since partition, we can see there are many events because this partition, there is no natural partition. This was artificial partition done by the British. So the impact of that partition is still continuing, but still we cannot say that India is having only difficult relation with the neighbors. We are helping like Operation Maitri, and we help even Myanmar also during and during COVID, sir. By Operation Vaccine Maitri, we supplied vaccines, and via SARC also, with SARC Food Bank, we are helping the neighbor countries. So we cannot say it is the failure, and especially, sir, when it comes to neighborhood, the Jawaharlal Nehru's Panchshil and
the neighborhood first policy. These are the uh, remarkable steps taken by India. Okay, good. Thank you. Thank you. Over to Pooja ma'am. आईएनएस वाहिनी के बारे में जानते हैं क्या है? यस मैम, कलावेरी क्लास का ये INS वागीर है और ये 5th इन द कलावेरी क्लास था, जो कि इंडिया और फ्रांस मिल करके हम लोग मझगांव डॉक में, जो कि इंडिजिनसली बिल्ट रहेगा विद द टेक्निकल सपोर्ट ऑफ फ्रांस, एंड द 6th वन इज द वैगाशीर. I think that is also delivered. So I think all 6 of Calaveri class ships are delivered. ओके, इनलैंड नेविगेशन क्या होता है? इनलैंड नेविगेशन मैम, जो अपनी इनलैंड वाटर्स होते हैं, लाइक लेक्स, बिग लेक्स, रिवर्स, जैसे कि हमने अभी नेशनल वाटरवे 1 के रूप में हल्दिया से लेकर के वाराणसी तक इनलैंड वाटरवे को डेवलप करने का प्रयास किया, और अभी एक गंगा विलास पैसेंजर शिप भी इस इनलैंड वाटरवे में ट्रेवल किया था. ओके, आपने 2010 में नॉटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया है, फिर पॉलिटिकल साइंस से पीजी कर रहे हैं, PSIR आपने चुना है ऑप्शनल के रूप में, तो इतनी विविधता कैसे है और आपके मैम, सब्जेक्टों में? सब्जेक्ट जितना आपने चूज किया है उसमें इतनी विविधता कैसे है सब्जेक्ट्स में? मैम मेरी इच्छा तो थी कि मैं अपने नॉटिकल साइंस को ही ऑप्शनल रखूं, पर चूंकि नॉटिकल साइंस BPSC के ऑप्शनल में लिस्टेड नहीं है, तो मुझे कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना था. और चूंकि मैं यहाँ PSIR ले रहा था, तो साथ में मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स भी कर रहा हूँ, और इसी साल मैंने JRF भी क्लियर कर लिया पॉलिटिकल साइंस का. ओके ओके, आपने अपना काफी समय मुंबई जैसे बड़े शहरों में व्यतीत किया है, और बिहार सिविल सर्विसेज के थ्रू अगर आप आते हैं तो काफी छोटे जगहों पे आपको जॉब दी जाएगी, तो आप समायोजन कैसे करेंगे? मैम, समायोजन का कोई इशू तो मुझे नहीं हुआ, क्योंकि मैं बिहार में ही पला बड़ा हूँ, और खास करके जब हम लोग मुंबई शहर में थे वो तो सही है, पर जब हम लोग शिप पर रहते हैं तो एक छोटे से शिप पर कभी कभी हमें 1-1 महीने तक रहना पड़ता है. तो छोटी जगहों का मुझे नहीं लगता कि कोई इशू होगा. हम लोग एक शिप पर 20 से 25 लोग ही रहते हैं, कभी कभी आपको 1 महीने तक उन्हीं 20-25 लोगों के साथ रहना पड़ता है, तो इन चीज़ों का इशू नहीं होगा. और चूंकि मैं बिहार के एक ग्रामीण बैकग्राउंड से हूँ, तो आई थिंक कि मैं बहुत अच्छा सर्व कर पाऊंगा, बिकॉज आई नो पर्सनली दैट व्हाट डिफिकल्टीज आई हैव फेस्ड. ओके, आपका सर्विस प्रेफरेंस क्या है? और मैम, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस इज बिहार एजुकेशनल सर्विसेज, ओके सेकेंड इज बिहार ट्रेवल सर्विसेज, एंड थर्ड इज द सब रजिस्ट्रार, एंड फोर्थ इज बिहार इलेक्शन सर्विसेज. ओके, तो बिहार में शैक्षणिक स्थिति जो है उसके बारे में कुछ चर्चा करिए, क्या जानते हैं? बिहार में मैम, बिहार की जो शिक्षा है, ये पूरे देश में बिहार की शिक्षा का जो मैम, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स ओके करके ओके बोल दूं. ओके, यू कैन. थैंक यू मैम. The status of education in Bihar is not so good. As we can see, our literacy rate is around 60%, and if we talk about the women, it goes around 50%. So we cannot say that this paints a good picture of Bihar. But with the new education policy and the efforts of the Bihar government to put more teachers, like we see the recent recruitment of the teachers, uh, we can see good changes. दो यूनिक चीजें जिसे आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? Ma'am, one is the punctuality, and second is the law and order. शिक्षा व्यवस्था में? शिक्षा व्यवस्था में मैम, one is the punctuality, and second is the increasing the quality sent by ISRO to study the sun. It will be situated at the L1 Lagrange point, and the main objective is to study the sun, like the coronal mass injection, the solar winds, solar flares, and apart from this,
it will increase our soft power also, and it also signifies that India has the capacity to lead the space race. Okay. Acha, you must have heard about the Nari Shakti Vandan bill. Yes, ma'am. What are the main features of this bill, and which feature do you want to modify? Recently, the Nari Shakti Vandan Bill was passed as 106th Constitutional Amendment Act, and the main feature is providing 35% reservation in Parliament as well as state legislative assemblies. But, ma'am, one of the most prominent issue in that bill, in that act, is it will be implemented in 2028, Are or you not sure? from this election, from the next election. So this is one of the most important thing. The other things, we cannot reserve some fixed constituency. There will be some issues with the bill, as like we are fixing a reservation in any constituency, but the other candidate who are really talented and who are really working, they may get demotivated. Okay, So how will we you modify it? we can make it dual member After- constituency. Okay. Acha, we have seen recently that there is growing tension in the bilateral relations between India and Canada. What was the reason of this tension and how to end it? Ma'am, due to some issue of the Khalistan, and there were some killings in Canada. So since G20 meeting, we are seeing some escalation in the India-Canada relations. But however, as we can see, there is a large migration from India in Canada. So our bonds are strong. We just need to reshape it. So it can be done by both countries working together on the same line. If Khalistan is against the Indian government, it should not be supported by Canada, and both the government are working on it. What is the importance of Canada for India? Canada is having multiple importance for India. The first is the remittances and the employment. Second, Canada is having huge resources which are untapped due to its geographical location, which lies in the north. So in future also, Canada can supply us like oil, energy, and foods. Apart from this, if India wants to be a developed nation, so Canada will also help, as Canada is the part of the developed nations, and Canada is part of NATO also. So they are having some access to some latest technologies which can help us. Okay. Are you familiar with the term global common? Yes, ma'am. Global commons, like How are the countries exploiting it? Shed some light on the this. Global commons, yes. the global commons are those things which are not particular to any country, like space, environment, even seas, high seas. So, but the problem with the global common is the saying that the everyone's responsibility is no one's responsibility. So global commons are everyone's responsibility, but none of a country is solely responsible. So what countries are doing, they are trying to extract is as much as possible. Like if we talk about the South China Sea, China is trying to convert that thing into Chinese lake by making artificial lakes. And if we talk about the environment, every country is trying to get cheaper energy, which is not good for the environment. It may benefit their economy, but not good for the global commons. Okay. Okay. Tell me, what is the limitations of Chat GPT? Chat GPT is one of the recent phenomenon of the technology, in which computer is trying to uh, mimic
but there are limitations like it doesn't have the emotional intelligence. It uses the data which is already available on internet, so data can be wrong, it can be old, plus Thank you very much, Vikas ji. Your interview is over. thank you ma'am. Vikas Kumar ji, Ji sir. your confidence level is awesome. We noticed Thank you sir. that right from word go, your confidence is superb. Your flow in speech is also incredible. Your knowledge base is very remarkable. So many questions were asked from various sections, and you could answer them very well. There is a poisoniness in your personality. Your personality is calm because we also noticed the movement of your body, your neck, your facial expression. This all signified that you are a very calm man. So the honorable board members, they are happy when they come across a candidate who is confident and calm and also has an excellent information base, knowledge base. So these are your strong points. Some of the areas जहां हमें लगा कि आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं विकास कुमार जी, पहला तो यह है कि जो आपका एरिया है जॉब का अभी जो करंट में है, तो आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि हु इज द नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि आपका फील्ड वैसा है कि दे माइट बिकम क्यूरियस टू नो अबाउट दिस थिंग्स. फर्स्ट थिंग इज दिस. सेकेंड इज कि प्लीज बी प्रिपेयर्ड टू स्पीक इन हिंदी एज वेल, क्योंकि वहां पर बोर्ड मेंबर्स आपको अंग्रेजी में भी पूछेंगे, हिंदी में भी पूछेंगे, तो आपको हिंदी में भी उत्तर करने के लिए तैयार रहना है. इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपका पूरा इंटरव्यू हिंदी में हो जाए. इट इज क्वाइट पॉसिबल. सो बी प्रिपेयर्ड. आप उसको उस हिसाब से अभ्यास कर लीजिएगा ताकि आपको हिंदी बोलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है. जी अगला जी सर. पॉइंट यह है कि जैसे स्टार गेजिंग आपका शायद हॉबी है, स्टार गेजिंग, तो वहां से कुछ सवाल बन रहे हैं बिकॉज योर हॉबी इज समवॉट इनोवेटिव एंड न्यू हॉबी. तो बोर्ड मेंबर्स में बी वेरी क्यूरियस टू नो कि क्या है ये. कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है. द नेक्स्ट थिंग इज कि कोई भी सेंसिटिव इश्यू पर जब कमेंट करें, से फॉर एग्जांपल द इश्यू ऑफ विमेंस रिजर्वेशन, तो इस पर बहुत ही बैलेंस तरीके से बोलने का प्रयास करना है. जैसे आपका एक कमेंट आया था कि द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन कैन बी रिमूव्ड. कैन बी रिमूव्ड की जगह आप यूज कर सकते हैं मे बी रिमूव्ड, माइट बी रिमूव्ड, ताकि एक तरह से आप डोर को ओपन रखिए. एब्सोल्यूट टर्म्स वहां नहीं बोलिए, क्योंकि हो सकता है कि रिजर्वेशन का इश्यू ऐसा है कि बोर्ड मेंबर्स उसको अदर वे में ले लें. ठीक है. तो वहां पर जो है ऐसा शब्द बोलिए जो माइल्ड हो, मे बी, माइट बी, इट सीम्स, परहैप्स, इस तरह से बोलकर आप उससे निकल सकते हैं. तो दैट वुड बी सेफर फॉर यू. एक और पॉइंट याद रखिए कि आपसे एक सवाल पूछा गया था कि पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल है, तो कैसे आप इसका बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करेंगे. तो आपका एक स्टेटमेंट आया था कि बिहार की पॉलिटी उतनी अच्छी नहीं रही है. इस तरह का आपका कुछ स्टेटमेंट आया था. तो इस तरह के स्टेटमेंट देने से बचिएगा, क्योंकि जब आप इस तरह का स्टेटमेंट देंगे तो क्वाइट पॉसिबल है कि बोर्ड मेंबर्स आपको अटैक कर दें आप पर, एंड देन यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिफेंड योरसेल्फ. टू व्हाई टू ओपन दैट फ्रंट, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. ठीक है. और उसके अलावा एक सवाल था कि जो विमेंस रिजर्वेशन बिल है, तो उसकी आलोचना करने के बारे में कुछ कहा गया था कि क्या चैलेंजेस है, क्या लिमिटेशंस हैं. तो वहां पे बेहतर रहता है कि ऐसे पॉइंट को दीजिए जो माइल्ड हो, बहुत ही माइल्ड हो, और उसमें आप एक पॉइंट लगा सकते हैं कि सर सम ऑफ द क्रिटिक्स आर्ग्यू, सम ऑफ द क्रिटिक्स आर्ग्यू, सम ऑफ द एक्सपर्ट्स आर्ग्यू. तो उस तरह से क्या होगा कि आप खुद को बचा लीजिएगा, और जो क्रिटिक्स है उन पर सारा जो आलोचना का या जो स्टेटमेंट उनके तरफ से आ रहा है उस तरह से आप उन पर डायरेक्ट कर दोगे. तो दीज आर सम ऑफ द टेक्निकल एरिया जिसको कि आप इजीली अच्छा कर सकते हैं. The most important thing is that you have an excellent knowledge base. आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, and you seem to be self-assured about yourself, विकास कुमार जी. So outstanding. आप बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं. ओवर टू पूजा मैम. विकास जी, जैसा कि सर ने कहा,
जहाँ जहाँ आपको काम करने की जरूरत है, सारी चीजों को डिटेल से सर ने बताया, उसे फॉलो कीजिए। आप एक बहुत अच्छे थैंक यू कैंडिडेट हैं। मैंने ये थैंक नोटिस किया यू कि आप थोड़ा गंभीर रहते हैं, तो थोड़ा सा गंभीर नहीं रहना है। आप जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं बोर्ड, उनके साथ इतना गंभीर नहीं होना है, उसे अच्छे से एंजॉय करते हुए आप इंटरव्यू दें और चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आई कांटेक्ट भी अच्छा है, बस मुझे इसी चीज की कमी लगी। बाकी जितनी चीजें सर ने बताई है उसे बस फॉलो करना है। थैंक यू ओके, ओवर टू भावना मैम। No doubt that you're a very good candidate, Vikas थैंक यू ji. मैम बस there's one thing, जैसे कि सर ने कहा, avoid making extreme statements, okay? And एक जगह पे आपने you यूज किया, हालांकि you corrected yourself, you said we instead of that, right? Immediately you realize that. तो आप उस तरीके के वो सब शब्दों से बचिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, that needs a practice, okay? And the third thing, like ma'am said, smile, okay? And according to me, your voice level can be little bit, थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, कहीं कहीं कुछ जगहों में कंसंट्रेट करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है? तो थोड़ा सा आपका वॉइस लेवल, अदर देन दैट कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ठीक है, बस ओके थोड़ा, ओके? सो प्रैक्टिस कीजिए। माय एडवाइस टू यू विल बी प्रैक्टिस। बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा लगना चाहिए कि यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस, लाइक मैम सेड, स्माइल हेयर एंड देयर, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके? सो या, these were the main points, and best of luck for your upcoming interview. बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू या मैम विकास कुमार जी, एनीथिंग टू आस्क? आई थॉट दैट कुछ प्रश्न आपके मन में है। सर अगर हिंदी में अगर बोलने में इशू हो तो मैं सर से पूछ सकता हूँ क्या कि सर मैं इंग्लिश में बोलूँ? नो नो विकास कुमार जी, मुझे no, because as an administrator you have to work in Bihar, so it is being expected from you to be fluent in Hindi. So if, because as I said जी सर earlier na, ki it is quite possible that your entire interview might be in Hindi. So if you tell a single member, okay, he may accept, okay, fine, then again second member may ask in Hindi, then what you will be doing? Are you getting the point? ठीक है सर आपको यस सर बस हम गेटिंग प्रैक्टिस कर लेना है विकास कुमार जी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बेहतरीन है, आपका नॉलेज बेस इतना शानदार है कि आपको 2 से 3 दिन आप प्रैक्टिस करोगे ना और थोड़ा सा माइंड मेकअप कर लेंगे, आपकी हिंदी तो, इंग्लिश तो आपकी बहुत शानदार है, हिंदी भी आपकी बहुत शानदार है, वी नो इट वेरी वेल। बस आप उसको थोड़ा अभ्यास कर लीजिए।